स्पोर्ट्स आवर में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे खेल से जुड़ी तमाम अहम खबरें, साथ ही करेंगे चर्चा उस पर अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के साथ। और मेरे साथ है मेरे को एंकर अमित अरोड़ा। Thank you very much, Kitasha. Of course, yesterday the big news came for sports lovers when PV Sindhu won the China Open Super Series, and today we had another big story, which was India winning that cricket test match, and therefore we've got this gift for you. Here is Sports Hour in a new format. We've got some new exciting segments, and I'm very excited, Kitasha. बिल्कुल। और अगर हम बात करें, तमाम अहम खबरें होंगी और एक नए रूप में आज स्पोर्ट्स आवर शुरू किया जा रहा है। और अगर हम खास तौर पर बात करें, आज वाकई बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत सारे अगर क्रिकेट की हम बात करें या फिर अगर हम बात करें पीवी सिंधु की जीत की, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चलिए शुरुआत करते हैं और एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। क्यों अमित? Absolutely. Let's start with sports roundup. India's taken 1-0 lead in Test series against England. Courtesy. So that's the story. India's taken the lead in the 5-match Test series against England, courtesy superlative spin bowling by the troika of Ashwin, Jadeja and debutant Jayant Yadav. They collectively bagged 14 wickets in the match, and India thrashed England by 246 runs. India has set England a target of 400 odd runs, and England couldn't manage that. Remember, this is the 50th Test match of Indian skipper Virat Kohli. He scored a good century and his half century in the 2 innings, 246 in all, and bagged man of the match. When the Australian think tank has taken some harsh decision after their loss to South Africa, replacing as many as 6 players, host Kiwis has thrashed Pakistan by 8 wickets in the first Test match that was played at Christchurch. Recent earthquake there did not deter the home side. In Tri-Nation ODI cricket series, host Zimbabwe were to meet Sri Lankan side, but the match was called off due to bad weather. Zimbabwe and Lanka have taken 2 points each. Now Zimbabwe's last match against Windies becomes a must-win. और इस साल के घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के ऋषभ पंत ने धमाल मचा रखा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछले 5 रणजी मैचों में 4 शतक जड़े और इन्होंने 48 बॉल में शतक बनाया। धुआंधार सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोट से उबरने के बाद कर रहे हैं क्रिकेट में वापसी। अपनी पहली घरेलू क्रिकेट में उनका दिल्ली के लिए खेलना तय माना जा रहा है। भारतीय महिलाओं और कैरेबियन महिलाओं के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच मेहमान टीम ने 31 रन से जीता। पहले बल्लेबाजी करते वेस्ट इंडीज की महिलाओं ने 5 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए। भारतीय महिला टीम 106 पर सिमटी। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी दीवार को उन्हीं के घर में धाराशायी किया। सिंधु ने बैडमिंटन सुपर सीरीज का चाइना ओपन खिताब अपने नाम किया। उन्होंने चीनी सुनयांग को 21-11, 17-21, 21-11 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु को इस जीत पर बधाई दी। साल के अंत में होने वाली एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ब्रिटेन के एंडी मरे ने 4 बार के विजेता नोवाक जोकोविच को 6-3, 6-4 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। और In the 22nd edition of the Chennai Open tennis tournament to be played in January, top names will be participating: Marin Cilic, Roberto Agut of Spain, and rising star world number 48 Borna Coric. In World Tour doubles final in London, Finnish player Continent and Australian John Peers won the finals against South African Revan and American Rajiv Ram 2-6, 6-1, 10-8. In EPL football, Chelsea tops the league table for the first time this season. Backed by 6 straight wins, Chelsea has 1 point lead over second place Liverpool, which has 27 points from 12 matches. If sports gossip in England Premier League is to be believed, Lionel Messi may join Manchester City. It is being reported in England media that Man City may break their bank lockers, and they're preparing to offer him £200 million to sign the FC Barcelona star. In German Bundesliga football, Borussia Dortmund gets the better of table toppers Bayern Munich by a solitary goal. With this defeat, Bayern also lost their top slot in the league table. मैड्रिड के घमासान में रोनाल्डो की तिगड़ी की वजह से रियल मैड्रिड ने शहर के दूसरे छोर की टीम एटलेटिको मैड्रिड को 3-0 से पछाड़ा। रियल की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट्रिक लगाई। भारतीय सुपर लीग फुटबॉल में चेन्नई एफसी ने एटलेटिको डी कोलकाता की सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता किया मुश्किल। कोलकाता की टीम 39 मिनट में पहला गोल दागा और चेन्नईयन ने 77वें मिनट में गोल कर मैच में की वापसी। रविवार को संपन्न हुई दिल्ली हाफ मैराथन में रियो ओलंपिक के चैंपियन केन्या के एलियूड किपचेगो ने पुरुष वर्ग का और इथियोपिया की बर्कनेस दिगेफा ने महिला वर्ग का खिताब अपने किया नाम। दिल्ली हाफ मैराथन में भारत की तरफ से जी लक्ष्मण ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं महिला वर्ग में मोनिका अथारे ने निजी प्रदर्शन में सुधार किया। आईएएफ एथलेटिक्स अवार्ड 2016 के निर्णायक चक्र का ऐलान।
पुरुष वर्ग में उसेन बोल्ट, मोहम्मद फरा और वाइट वेन निकात दावेदार। महिला वर्ग में अलाज अमालाना और इलीन थॉम्सन और अनीता वुलरासिक शामिल। And now the final set of 5 news in National Women's Boxing Championship. Sandhya Rani created an upset win against two-time World Championship medalist Chotu. In 19th National Racing Championship at both International Circuit on Sunday, Reddy and Vishnu Prasad emerged as national champions in different categories. Reddy won the race in Euro category and Vishnu his race in LGB Formula 4 categories. Gaganjeet Bhullar of India won the $3 lakh Indonesia Open golf tournament for the second time in his career. He played the card of 4 under par 68. Last time Bhullar won the event in 2013. Henrik Stenson won the race to Dubai golf title and Englishman Matthew won the World Tour Championship in Dubai by a stroke. World number 4 Stenson was 12 under and shared 9th position. 20-year-old England's Charlie Hurl has won the Golf Tour Championship at Florida course by 2 shots. So that was the first segment in this new avatar of Sports Hour, where at the top of the program you'll get to hear 25 sports stories from India and international. That's pretty fast, but at least gives a sense to the sports lover of what's happening. बिल्कुल, पूरी दुनिया में क्या कुछ घट रहा है उसका नज़ारा हम बहुत जल्दी देख पाए यहाँ बैठकर। और खास तौर पर अगर बात करें कि किस तरह से भारत को जीत मिली है और उस पर हम चर्चा करेंगे। सिंधु की जीत भी बहुत मायने रखती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश राव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स आर के इस खास शो में। शुक्रिया गिताशा। So that's the second segment on the show where we'll have the experts speak. So senior journalist Rakesh Rao joins us in this first edition of Sports Hour. Do you like the set, the entire ambience, the speed? I love it. I mean, because anything which is new, it's always exciting, and it's always good to be back where there is sports. So it's in a new avatar with a lot more things being asked and said. So I think I'm going to love this. And of course, today we also have such good news where in the second test match we have seen the touring England side at Visakhapatnam losing out to India. A very well-deserved win by the Indians. Absolutely. I mean, because the result was never in doubt, if you ask me. Once we won the toss, that made the difference to me. And of course, because the way we actually allowed England to get its foothold in the first match, that was something which was very surprising for me, because I thought we were going to test them on a turning track, which wasn't the case. You allow them to score 500 runs, we score close to 500 runs, but what happens is at the end of the 5th day, it's the visiting side, even in a drawn game, they go away as psychological winners. Yes. So that is where we yielded a lot of ground to them. Now, this was an opportunity. People were actually thinking that the Vizag wicket, known to be a batting wicket, there'll be a lot dry and, the English guys will actually struggle. That wasn't exactly the case. If you see, even on the last day, the ball wasn't turning so much. The surface held a lot of surprises for both batsmen as well as the bowlers. So I think what we did was fantastic. But again, the key was the toss. I mean, you put 450 runs on the board. Thereafter, the team batting second is always facing a daunting task. Yes. Because you can have a partnership or two, you can dominate a session or two, but to get over that, because once you put the runs on the board and you're staring at them like Indians did, 537 in the first match, still we went up to close to 500. Now this is an English team which has a lot of character. Yes. That's what we saw. So I think if you see, progressively, if you look at the innings score, we scored in excess of 450, they scored in excess of 250. Then we just barely managed to score 200, and then they barely crossed 150. So progressively, the number of runs scored for every 10 wickets, that wasn't the same. So I think the wicket held a lot of surprises. Our bowlers did a good job, and on a wicket where we expected the spinners to do the job, I think the contribution of the fast bowlers can never be undermined, because if you look at what Shami could do with that one beauty of a ball to get rid of Alistair Cook in the first innings, that really hit them. And thereafter, I think the Cook's wicket in the second innings, that late wicket on the inning, and they took a review, and just look at their faces, crestfallen by that one dismissal. Because had Cook come out today as an overnight not-out batsman, I think things could have been a lot different. And but he scored so many runs against India. Exactly. I mean, he's on a roll. He's a batsman in great form. He had the temperament to stay on this wicket. So Indians got rid of him. And what you do is, once it's a different day, you come with a different mindset. Had it been the same Cook and Hamid,
Imagine they were 80 odd for no loss. It would have been a different ball game. But those 2 wickets late in the day, see what happens is if they had lost 2 wickets, say 10 for 2, and then they end up at the same score as they did, then Indians would have been on the back foot because they would have added those 70 odd runs. Here that didn't happen. I mean, they were coming to this final day without a partnership going there. And then of course they struggled. And I think the biggest mistake what the English team did here was to actually go into a match letting the Indians know that, look, we are not chasing down your total. We are here trying to survive 5 sessions. Oh, that is very difficult. Unless you rotate the unless you rotate the strike, it just doesn't work. I mean, you can't be defending all the time. And every time you defend, you have to be lucky. You have to be unlucky just once. Yes, absolutely. बिल्कुल. और अगर खास तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा दोनों बल्लेबाजों में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था भारतीय टीम को, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अगर हम कहें और गेंदबाजी देखने को मिली, तो ओवरऑल एक पूरी टीम का था. शमी की आपने बात की, मोहम्मद शामी ने क्रीज पर रहते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और अगर डेब्यूटेंट था, अगर हम जयंत यादव की बात करें तो बहुत ही बढ़िया खेले. देखिए, पहले हम ये देखें कि फास्ट बॉलर्स का रोल नॉर्मली होता क्या है कि एक स्पिनिंग ट्रैक में हम फास्ट बॉलर्स की जो यूटिलिटी है उसको हम बहुत बार हम सोचते ही नहीं है. हमको ये याद रहता है कि साहब अश्विन ने 22वीं बार 5 विकेट लिए. लेकिन देखिए, देयर वाज ए लिटिल स्पेल्स. अगर आप ये देखें कि शमी का कंट्रीब्यूशन, बड़ा विकेट उन्होंने लिया पहले इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग में जब स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहा था, जैसे आज हमने देखा सेकंड न्यू बॉल ली गई और शमी ने आपको 2 बड़े विकेट निकाल के दिए. ये एक बड़ी चीज़ है. अगर आप मोइन को देखें, राशिद को देखें, कितने भी ये नीचे के जो खिलाड़ी हैं, चाहे उनका विकेट कोई भी ले, इंडियन अटैक में, इंडियन कंडीशंस में उन्होंने दिखाया है कि नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन वो किसी से कम नहीं है. स्पिन खेल सकते हैं वो लोग. लेकिन जिस विकेट पे अगर बाउंस कम है, यहाँ टर्न कोई ज़्यादा नहीं था, बाउंस की दिक्कत हो रही थी, और यहाँ पे वो लोगों ने ये विकेट भी देखा, और इस पे मेरे ख्याल से उनका जो एक टैक्टिकल एरर जो ये है, क्योंकि अगेन आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऐसे विकेट पे आपको खेलने को नहीं मिलता है. ये बहुत रेयर ऐसा विकेट है जहाँ पे कि बैट्समैन रन भी बना रहा है. अभी जैसे अगर आप देखें विराट कोहली उसी विकेट पे, जब पूरी टीम आपकी 204 पे ऑल आउट हो गई है, उनका कंट्रीब्यूशन 81 है. And Cook mentioned that at the ceremony, that take 80 out, the entire team was out for 120. Very true. That is what I was trying to say, that if you look at the contribution of the batsman on a wicket like this, it wasn't easy to score on the 3rd and the 4th day, or rather the 4th and the 5th day. However, you have to give credit to the bowlers here. जैसे आपने पूछा कि जयंत यादव, अब जयंत यादव देखिए, हमने उनको पहले मैच में देखा. अब जब उनमें एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी, बड़े अरसों बाद हिंदुस्तान को एक ऐसा ऑफ स्पिनर मिला है जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल मोल्ड में है. हाँ, उनका जो एक्शन है देखिए, ऊपर से बॉल आती है, लूप बहुत प्यारा है. ये आपको आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट जब हम बात करते हैं T20 की और लिमिटेड ओवर की, ये एक ट्रेडिशनल मोल्ड का एक ऑफ स्पिनर आपको मिलना, और वो भी जिस अंदाज जो कॉन्फिडेंस है उस लड़के का, अगर आप देखें, अगर आप उनसे कभी बात करें, आपको लगेगा. क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें जो चीज़ शायद लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, राहुल द्रविड़ ने इनको बहुत बैक किया. जब से ये इंडिया ए टूर पे आए हैं, और इन्होंने इस लड़के को बाहर निकाल के रखा है, भाई मुझे ये चाहिए. ये इंडिया ए और अंडर 19 ये जो लेवल पे जो लड़के हैं, इसके ये अश्विन है एक्चुअली. अब उसको आपने एक मौका दिया है अश्विन के साथ खेलने का. अब यहाँ देखिए, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है. 2 ऑफ स्पिनर हैं, दोनों यंग हैं, एक बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं, दूसरा अपना पहला मैच खेल रहे हैं. अश्विन जयंत को हेल्प कर रहे हैं काफ़ी तौर पे, क्योंकि पहला मैच खेल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उनको इनकी ज़रूरत है कि कोई उनको उन्हीं के आर्ट पे एक मैच के दौरान उनको अंदर ग्राउंड के अंदर उन्हें हेल्प कर सके. ये बहुत कम होता है. 11 प्लेयर्स में आपको एक ही ऑफ स्पिनर या एक ही लेग स्पिनर या एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलता है. यहाँ आपकी किस्मत अच्छी है कि एक फॉर्म जो अपने बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे हैं अपने पूरे ज़िंदगी के, वो आपको ग्राउंड के अंदर आपको बता सकते हैं कि आपको क्या कर सकते हैं. यानी कि बाउंस भी है, यॉर्कर भी है, वेरिएशंस है उनके अंदर, और फुल लाइन और लेंथ के साथ खेलते हैं. बिल्कुल. देखिए, डिसिप्लिन है. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको टर्न नहीं मिल रहा है, जैसे अगर हमने आज देखा स्टोक्स का विकेट जो उन्होंने लिया है, 2 बॉलें बाहर गई, तीसरी उन्होंने एकदम से तेज 15 किलोमीटर ज्यादा स्पीड पे वो एक बॉल डाली थी. स्टोक्स को समझ में नहीं आई कि वो बॉल का पेस, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही जो उनका मूवमेंट था थोड़ा स्लो रह गए, गलत लाइन खेल गए. क्योंकि देखिए, ये आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है, और किसी भी लेफ्ट हैंडर के लिए एक ऑफ स्पिनर की ऐसी गेंद खेलना बहुत आसान नहीं होता है. अगर वही राइट हैंडर होता तो शायद इजी हो जाता, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है. क्योंकि इसीलिए इंडिया ने 2 ऑफ स्पिनर इस मैच में खिलाए थे, और अमित मिश्रा जो एक बहुत सीजन लेग स्पिनर है, उनको बाहर रखा था. और अमित शर्मा के सीनियर भी हैं वो हरियाणा टीम में, तो एक सीनियर को बिठा के एक जूनियर को उनको टेस्ट मैच खिलाना,
बहुत बड़ी बात. But do you think, Rakesh, not only Jayant is a good bowler, and we did see when Virat Kohli came to accept his man of the match honours and speak as a captain, he had lavish praise for Jayant Yadav. Do you think he's no mug with the bat, because the small partnership that he had in Indian first innings was also very critical? Amit, he has scored more than 1,000 runs in first class cricket. I mean, he can bat. Yes. He can bat seriously. So we can call him a proper all-rounder. Yeah, he can bat. I mean, see, because at the highest level, what you are seeing here is he's being tested by the bowlers who don't really know his like they only know his statistics maybe. But the way he was playing, if you recall that partnership between Ashwin and like Jayant, both as batsmen, not as bowlers, as batsmen, they were getting right on top of the ball. Yes. Now, on a wicket which doesn't offer you too much of turn, but ball was keeping awkwardly low. But then for you to get on top of the ball, even when there is an unexpected bounce. Now, this actually helped those two bowl because they knew exactly how a batsman is thinking, because they themselves could bat a bit. Yes. So, that gives you a better understanding of the surface. That helped them when they were bowling. But one person who really loves the surface when it comes to Vizag is Indian skipper Virat Kohli. Let's look at the statistics first, the overall summary of the second test match that India eventually went on to win pretty comprehensively. This is how it shapes out. India won the toss, as Rakesh said, a good mammoth total in the first innings. That was good to deter England in the first side. But then in the second side, it was courtesy again. Kohli, 80-odd runs, following up 167 runs he scored in the first innings. And that crucial Cook wicket on the last penultimate day, dying moments. But overall, this test match will always be very special to skipper Kohli because he was completing a half century. And in his half century, to score 240-odd runs and win India a test match in Vizag would be special. See, imagine he scored, I think, 248 runs and India won by 246 runs. So here he is, he's virtually setting up the margin of victory, which looks, as you said, very comprehensive. But, for me, that 81 that he made is worth its weight in gold. It could be seen as a 120 or 150 on a normal wicket. Because the way he got those 167, if you recall, I mean, on that day, batting was the best. I mean, it was the easiest. Fall of two early wickets actually helped Virat to come early. We were, what, 22 for 2 or something. From that point in time, if you see the way these two guys got together, 226 runs for the third wicket, and two batsmen who love to stay at the wicket. One guy is known to be a grafter, the other is a natural stroke maker. This combination for a team which is actually ruining this decision, oh my God, we should have won that toss. Yes. I think Cook, half of the day he must have spent that this was the best time to bat, but we didn't win the toss. So from that mindset, when you start hammering it in, you are 300 odd for 4, that is where you take it away from the opposition on day one. They are yet to bat. They have 20 wickets in hand, and you've already won half the battle. And the lead of 200, again, psychologically important 200. It could have been 190. But that psychologically important 200, where you have the right to enforce follow-on, and you choose not to. This is again a psychological game. So chess, it's like a game of cricket can sometimes look like chess. Yes. You threaten something without executing it. Sometimes threat is far more important than its actual execution. Bilkul. When you hold the cards and you say, look, I'm capable of doing this, I can force and I can actually enforce follow on, you feel a bit humiliated because you've been asked to bat a second time in succession. But Australians in the last, say, about a decade or so have shown it's better not to enforce follow on because your bowlers are tired. Give them that rest. Put the match beyond the opposition. Don't give them a chance to come back. But don't mention Australia these days. Yeah. Oh, of course. They are having a horrid time, obviously. But then, it is just like a wave, Unless it goes down, it doesn't come up. Yes. Imagine that the Australian wave is on the downside now. It'll come up. You can't stop it. It is a fantastic cricketing nation. Yeah. और अगर हम मैच के पूरे रोमांच की बात करें तो इतना अच्छा था कि बैटिंग करने वाले को नहीं लग रहा था कि मैं आउट हूँ और बॉलर को लग रहा था कि मैंने आउट कर दिया. लेस्टर कुक के भी 2 बार DRS करने ने लिया गया. और अगर आज की बात करें तो जयंत यादव जब आखिरी बॉल आउट करने वाले थे तब भी ये लिया गया. तो कहेंगे बहुत ही बढ़िया मैच, पूरे टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया. बिल्कुल. देखिए, अगर आप फील्डिंग के मामले में देखें, क्योंकि हम बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, बैटिंग के बारे में बात करते हैं, अगर आप देखें जब इंग्लैंड ने बैटिंग की, जयंत यादव का एक पिकअप और थ्रो था जो कि साहा ने बिल्कुल धोनी के स्टाइल में बिना देखे उन्होंने विकेट पे मारा था. ये सब बड़े क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं जब एक बैट्समैन को लगता है कि मैं बिल्कुल सेट खेल रहा हूँ, मैं इनसे तो मैं आउट नहीं होऊंगा. कितनी बारी जब इंसान बैटिंग करता है उसे लगता है ये दोनों बॉलिंग कर रहे हैं ना, जब तक ये दोनों कर रहे हैं इनको तो मैं विकेट नहीं दूंगा, और सडनली आप रन आउट हो जाते हैं. वो आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है. वो ऐसा एक विकेट था जो एक साइकोलॉजिकल ब्लो है. अगर आप ये देखें कि ड्रॉप्ड कैच, फॉर एग्जांपल रूट का एक कैच आज सुबह ड्रॉप हुआ, विराट कोहली के हाथ से निकल गया, लेकिन बॉलर्स ने इमीडिएट कमबैक किया,
LBW डिसीजन आपको मिल गया। रूट देखिए, रूट इस पूरे टीम में कुक के बाद अगर कोई खिलाड़ी है जो स्पिन बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, वो है रूट। कुक बहुत लंबा खेल सकते हैं, उनमें पेशेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वो मेरे ख्याल से पूरा पूरा दिन खेल जाएंगे, रन शायद ज़्यादा ना बनाए, आपको स्कोर बोर्ड पर उनके रन ना दिखें, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आपकी उससे कम नहीं होगी कि साहब ये आउट नहीं हो रहे हैं और खेले जा रहे हैं, और कोई भी बॉलर उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। तो रूट और कुक, ये दो लोग, हमने दोनों को बहुत अच्छा हैंडल किया इसमें। राजकोट में हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया। अगर आप कुक जब हिंदुस्तान आए थे, उनके कुछ इनिंग्स अगर आप देखें पिछले, कोई बहुत सारे रन नहीं है उनके पास, हमने आते ही उनको फॉर्म में लेके आ गए। हमने कहा वेलकम टू इंडिया एंड टेक बैक योर फॉर्म। दिस इज व्हाट वी हैव डन रिपीटेडली। अगर आप देखें, हमने इंडियन हिस्ट्री में अगर आप निकाल के देखें, ग्रैहम गूच जब फॉर्म में नहीं थे, हम उन्हें फॉर्म पे ले आए, 100। गैटिंग जब फॉर्म में नहीं थे, हम उन्हें लेके आए। ट्रेस्कॉथिक जैसे बोरिंग बैट्समैन हो, या मतलब मैं क्रिस टैवरे, जेफरी बॉयकॉट, मैं अगर और पीछे जाऊं, इन पूरी की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, उनका एक लीन पैच आता है, सीरीज अगेंस्ट इंडिया एंड दे आर इन टॉप फॉर्म। ये हमारी एक खासियत रही है। लेकिन इस मैच में कम से कम हमने ये किया है कि उनको बहुत ज्यादा रन नहीं दिए, क्योंकि कुक जैसे खिलाड़ी ऐसे हैं, इनकी एपिटाइट बिल्कुल मतलब खत्म ही नहीं होती। But do you think, given the fact that he scored so many number of centuries now and almost unnoticeable, would you rate him as all-time great of this era, one of the all-time great? Not really. All-time great is something that I personally don't use it very loosely. For me, greatness has to be attained over a period of time, and he's still playing. Even when Sachin used to play, I never said that he would be known as a greatest batsman. First, allow him to finish his career. For me personally, again, it is not to put down what you're saying. What I'm trying to say is greatness is something, he'll be remembered as one of the greatest. 10,000, 11,000 runs. Of course, he has already joined the league. Yes. But I would still say that there is still to come. Let him realize his potential. Let him just, get whatever that God has, destined for him. He is a fantastic batsman. If you ask me, it's not easy to find batsmen like that. England is going to miss him the day Alistair Cook decides to leave, because he has that temperament, which in modern day cricket you don't get to see very often. People do score double hundreds, people do score triple hundreds, but the temperament, where are you going to get that temperament from? Imagine, they scored some 100 runs in some 70 overs. Now, this is what I'm trying to say. It is not easy for you to go out there and say, look, I'm not going to give you my wicket. I love my wicket a bit too much. It's like a typical Bombaya attitude, as it is called, the Khadus attitude. A Bombay batsman is known not to give you his wicket. A batsman from the north, batsman from the south. If you see Tamil Nadu, Karnataka on one side, Delhi, Punjab on the other side, and then you take Maharashtra and Bombay. If you compare these three teams, you'll always find batsmen from the west don't give you their wickets. Alistair Cook has that. Alistair Cook loves his wicket. He may not score, he may not look very attractive, but he loves his wicket. He has put a price tag on his wicket, and that's a bit too much. 30 seconds before we move on further, what can we expect in Mohali? Because you're going to be in Mohali. Yes, I'm going to be in Mohali. Yeah. See, Mohali wicket, if you see this season, whatever we have seen, it's a batting friendly wicket. But here, if you don't water it well now, it'll dry up. Because see, for us to win, always remember, very rarely India wins a test match on a good wicket. We have a track record of winning at home. We have won since the last 2 years, close to 24 months. Out of 15 test matches at home, we have won 13 and drawn 2. We are going for our 16th test match on a wicket which has a reputation of being pretty decent for batsmen. But if India has to win there, again 5 bowlers I'm saying, I don't see a change in this combination. It has to be a turning track. यानी खिलाड़ियों में ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, बैलेंस परफेक्ट टीम लग रही है अभी, बिल्कुल। किताशा जरूरत नहीं है, आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को जबरदस्ती छेड़ते नहीं, अनलेस कोई इंजरी हो जाए। ये विकेट इस बार हमारे बॉलर्स ने अच्छा किया, क्योंकि उस विकेट पे 20 विकेट लेना कोई बहुत आसान नहीं था, और खासकर जो टेम्परामेंट इंग्लैंड के बैट्समैन ने दिखाया है। और मैं फिर कहता हूं कि अगले मैच में चाहे वो टर्निंग विकेट हो, हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्यों नहीं वहां पे बहुत उनको टर्निंग विकेट नहीं दे सकते हैं। उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, और मेरी बात आप मान के चलिएगा, हम स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं। ये गलत फहमी है कि हम स्पिन से विकेट लेते हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन उतने सक्षम नहीं है, क्योंकि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रेगुलर स्पिन नहीं खेलते हैं, आप इन विकेट्स पे, हमारे अपने विकेट पे आप स्पिनर्स के सामने आप धाराशायी हो जाएंगे। इसलिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, क्योंकि आपका फिर आर्गुमेंट ये रहता है कि साहब हम तो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक में तो हमको आप एक ब्रेक दीजिए। ये इंडिया के अगेंस्ट चला जाता है, ये 11 में। तो ये भी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा मोहाली में एक ड्राई पापर टॉप आपको मिल जाएगा जो कि पहले दिन ही टूट जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको सोच समझ के विकेट देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो एशियन ओरिजिन के जो स्पिनर्स हैं वो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। But surely with the win here at Vizag, India's got 1-0 up in the 5 test match series, so when they go in Mohali, they'll certainly be more motivated.
And now we are motivated to share with the sports lovers about the next segment. बिल्कुल। और अब नजर डालते हैं खास स्टोरी पर। ग्राउंड जीरो से भारत की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर से बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन किया है। सिंधु ने चीनी दीवार को भेदते हुए चाइना ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज अपने नाम की। पेश है खास रिपोर्ट। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु ने चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चीन की सुनियो को हराकर करियर का पहला सुपर सीरीज प्रीमियर खिताब जीता। अगस्त में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी सिंधु ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सुनियो को 1 घंटे और 9 मिनट में 21-11, 17-21, 21-11 से हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने सुनियो के खिलाफ 6 मैचों में तीसरी जीत दर्ज करके रिकॉर्ड 3-3 कर लिया। सिंधु ने मुकाबले की जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले गेम में 11-5 की बढ़त बनाई। भारतीय खिलाड़ी ने अपनी तेजी की बदौलत इस बढ़त को 20-8 तक पहुंचाकर 12 गेम पॉइंट हासिल किए। सुनियो ने 3 गेम पॉइंट बचाए, लेकिन सिंधु को पहला गेम जीतने से नहीं रोक सकी। दूसरे गेम में भी सिंधु ने 6-3 की बढ़त बनाई, जिसे उन्होंने 11-7 और फिर 14-10 तक पहुंचाया। सुनियो ने हालांकि इसके बाद जोरदार वापसी की और कुछ दमदार स्मैश की बदौलत 14-14 से स्कोर बराबर किया। चीन की खिलाड़ी ने उम्दा रिटर्न्स के जरिए 18-16 की बढ़त बनाई। सुनियो ने 20-16 के स्कोर पर नेट पर शॉट खेला, लेकिन सिंधु के नेट पर शॉट मारने पर दूसरा गेम जीतकर स्कोर 1-1 कर दिया। तीसरे और निर्णायक गेम की शुरुआत में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सिंधु और सुनियो 6-6 के स्कोर पर बराबरी पर थीं। सिंधु ने इसके बाद कुछ दमदार रिटर्न की बदौलत 10-6 की बढ़त बनाई। सुनियो ने सिंधु की गलतियों का फायदा उठाकर स्कोर 8-10 किया, लेकिन ब्रेक के समय भारतीय खिलाड़ी 11-8 से आगे थी। सुनियो की कुछ गलतियों का फायदा उठाकर सिंधु ने स्कोर 19-11 कर दिया। सिंधु ने उस समय मैच पॉइंट हासिल किया जब सुनियो ने रिटर्न को लंबा समझकर छोड़ दिया, लेकिन यह बैकलाइन को छू गया। सिंधु ने इसके बाद अगला अंक जीतकर गेम, मैच और खिताब अपने नाम किया। साइना नेहवाल ने 2014 में चीन ओपन का खिताब जीता था, जबकि पिछले साल उप विजेता रही थीं। सिंधु पिछले साल डेनमार्क ओपन में पहली बार सुपर सीरीज टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें चीन की ली झुरुई के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंधु ने कहा, सुपर सीरीज जीतना मेरा बहुत पुराना सपना था। ओलंपिक के बाद सभी मुझसे पूछ रहे थे कि अब क्या। मेरे लिए सुपर सीरीज खिताब जीतना अहम था। ओलंपिक के बाद जिंदगी बहुत बदल गई है। लोगों को लगा कि मुझे वापसी में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैंने काफी मेहनत की थी। उसने यह भी कहा, यह मेरा पहला सुपर सीरीज खिताब है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। आखिरी बार मैंने डेनमार्क फाइनल खेला था। मैंने अच्छा खेला। मेरे लिए यह शानदार दिन था। मुझे लगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अभ्यास किया था।
Congratulations, PV Sindhu, for winning the China Open, getting the better of Sun Yu, the Chinese player, on her home soil. What an incredible achievement. Rakesh Rao, as someone who's known Sindhu when she was 10 years of age and you've observed her over the last decade, you must be very happy for her. Absolutely, I'm thrilled. And it's great to see that, somebody who was talking about doing well just about a week ago, she was here. And when we were having a chat, so she said that my first aim would always be to win a Super Series. I think it took a long time coming, because we all know that being a top 10 player, she's been world number 8 once. For a top 10 player to win a Super Series shouldn't be that difficult, but it took a bit longer. But the way she played up to the Olympics, she was looking very good. Then of course we all expected that there will be a lull now, because it's not easy to experience that high of you being you have to receive accolades, stay humble with complete humility. Then of course you need to train at the same time. All these are not easy. And so somebody who's just 20, let the Rio success affect her. Doesn't look like. Doesn't look manner. like, because I had a chat with her, and that was quite clear that that this kid was still a kid. And Gopi Chand has always maintained that unless you see this kid acting like a lady, you don't see maturity in her game. But I think post Rio, or rather in the run up to the Olympic Games, what all she did, and I think it all started from there. But then just look at what happened post Rio. She withdrew from a tournament, second event that she went to. Yes. She lost in the second round. Again, she lost early. And the best part is this Chinese girl who is now China number 3, Biang Zhao. That girl, now the thing is that girl and this girl are going to now compete in a long way. She's already been seen as the next big hope for China, ahead of Sun Yu. So she has beaten both of them in this tournament. So what we are looking here is, we are looking beyond Li Jiuri, Wang Yihan, Wang Shiqin. That era of the Chinese badminton is now going to change. Right. Because out of these 3 Wangs which we had, none of them is in the top 20, because they are not playing anymore and defending the points which they earned last year. So they are out of the ranking list, almost like the top names. So you have these names there, and out of which for Sindhu to go to China and to win a title there, not easy, never easy, because she is playing against 2 Chinese girls who are backed by the home advantage, the crowd's cheering, and then one of the girls, I mean these 3, I'm saying 2 Chinese and 1 Korean girl, all were ranked in the top 10. Bilkul. Sindhu is not in the top 10. So to beat 3 top 10 players, to win your first Super Series, that too in China against the Chinese, never easy. These are all the positives. Yes. And somebody who's just 21 years of age, a lot is going to happen now. And that Chinese girl is, of course, much younger. She's adding 2 years younger to her. So this rivalry is going to continue. Okay. And though if you see the head-to-head, I think still that Chinese girl is ahead. But this season they have met some 3 times. And since last year, I think last December, they have met 6 times, and it's 3-3. So this is going to be close. I mean, Sindhu's game will be noticed a little more in China, because China works as a team. Unlike here, it's Gopi Chand and his trainees. They're a team of experts, former Olympic champions, all those, the services of all those players are taken, whether it's table tennis, whether it's athletics. That's how the Chinese system works. Okay. So it's not going to be easy for her. But if you look at the gains, I think it's tremendous. Right. और अगर हम चीनी दीवार की बात करें, वहीं पर उन्हें भेदना और वहाँ पर अपना एक तरह से बादशाहत कायम करना बहुत बड़ी बात होती है। पहले ऐसा लग रहा था शानदार शुरुआत की, उसके बाद अगर हम नज़र डालें उनकी अगर सुन यू की परफॉर्मेंस में नज़र डालें तो एक तरह से वो दब रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छी वापसी की एक बार सुन यू ने और दिखाया कि मैं जीत सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर जब तीसरे राउंड में अपना दबदबा कायम करने की पूरी कोशिश की और सुन यू को बड़ी आसानी से हरा दिया। क्या कहेंगे? स्मैश बहुत अच्छा था, ड्राफ्ट का फ़ायदा उठाया, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर एक अच्छी ट्रेनिंग दिखाई दी। और रियो ओलंपिक के बाद अगर हम खास तौर पर बात करें तो एक मोरल बूस्टर भी रहा उनके साथ, बहुत ज़बरदस्त रहा। देखिए, क्योंकि अगर आप 3 टूर्नामेंट्स में आप कुछ नहीं करते हैं, आप सेकंड राउंड से आगे नहीं जा रहे हैं और आप वापस इंडिया आते हैं और आपको पता है कि ये मेरे साथ होगा। देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये थी, टूर्नामेंट में जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये होता है। तो उन्होंने पहला काम तो ये किया है कि उन्होंने अपने दिल पे नहीं लिया कि ओ माय गॉड, मैं तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और मैं सेकंड राउंड से आगे नहीं जा पा रही हूँ। ये बिल्कुल सही सोच है, सकारात्मक सोच, आशावादी रहना है आपको हमेशा। आप ये नहीं कह सकते ओ माय गॉड मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये होता है, ये एक ट्रेंड है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे एक वेव होती है, जब तक वो वापस नीचे नहीं आए वो बड़ी वेव होकर ऊपर नहीं उठती है। ये हमने अभी भी देखा, एक लो पैच आया, ठीक है,
उसके बाद ये जो हमने एक देखा है कि एक वेव की तरह ऊपर आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक, जैसे आपने कहा कि तीसरे गेम में उनका अच्छा खेलना, अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जहां वो पहला गेम हार के दूसरा और तीसरा जीती हैं। बिल्कुल। कितने गेम्स ऐसे हैं जहां वो पहला जीती हैं मगर उसके बाद 2 हारी। लेकिन यहाँ पे अगर आप पहला जीत के दूसरा हारते हैं, ये जो होता है तीसरे गेम में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जहां पे कि वो 1-1 के बाद, जो जीतने के बाद, सेकंड गेम हारने के बाद जो वापसी करती हैं, बिल्कुल, और खासकर जो कॉन्फिडेंस अब आया है, जो मैंने उस दिन देखा है, ये कॉन्फिडेंस है ओलंपिक्स के उन मैचेस के थ्रू। बिल्कुल। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर कोई टर्निंग पॉइंट की बात करता है, सिंधु के करियर का अगर टर्निंग पॉइंट अगर आप सही लफ्ज़ों में, सही मायनों में देखें, तो वो है ये है कि जब उन्होंने मिशेल ली को, कैनेडियन है वो, हांगकांग बॉर्न, उस लड़की को जब इन्होंने, उनका जो मेन कंटेंशन था लीग मैच में रियो में, जब उनको हराया, क्योंकि मिशेल ली ने इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 में से 2 बार हराया था, टीम चैंपियनशिप में हराया और फिर हराया। तो जब मैंने ड्रॉ देखा था और मैंने जब सिंधु से पूछा था, मैंने कहा था अभी हम मेडल की बात नहीं करते हैं, इस लड़की को कैसे टैकल करोगे? कहती है सर मैंने उनको एक बार हराया भी है, उसके बाद भी हराया। मैंने कहा नहीं, अब स्टेज बड़ा है, उन्होंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में हराया है, अब ओलंपिक गेम्स में वो जिस कॉन्फिडेंस से उतरेंगी वो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। मैंने वो गेम जब देखा था तब मुझे लगा कि हाँ, ये जिस अंदाज से उन्होंने उस लड़की को हराया, जो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग कोई बहुत खास नहीं होगी, लेकिन उसका गेम आपको सूट नहीं करता, ये चीज़ तो तय है। लेकिन उन्होंने उस जो एक ऐसी एक प्रॉब्लम थी उनके सामने, ली मिशेल के नाम की, उनको पहले सॉल्व किया। उसके बाद अगर आप देखें ताइज़ू को जिस हराया, और ये ताइज़ू वो लड़की है जिसने कि साइना नेहवाल को पिछले 6 में से 6 बार हराया। अभी रिसेंटली टाइटल जीता है उन्होंने। उनका मैच भी इनके साथ हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, कांटे की टक्कर, लेकिन मतलब हुआ नहीं। लेकिन जैसे आपने एक सवाल जैसे पूछा था कि लास्ट गेम में क्या हुआ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जब आपको लगता है कि नहीं, आई कांट गो रॉन्ग नाउ, क्योंकि एक अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने गेम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, जितना परिश्रम आपने किया है, उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि नहीं, ये मैं हारने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ सेकंड बेस्ट होने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जीतने आई हूँ। और दूसरी चीज़ यही है, जैसे आपने पूछा चाइना में जाके चाइना में जीतना एक बड़ी बात है। लेट्स गो बैक टू 2012 ओलंपिक्स खत्म हुए थे, पिछले ओलंपिक्स के बाद जो चैंपियन थी ली ज्यूरी, वो वापस जाती हैं गोल्ड मेडल लेके। चाइना ओपन में इन्हीं का मैच होता है सिंधु के साथ, और सिंधु उनको हरा देती है। तो जो चाइना में हम लोग ये बड़ी गलतफहमी है कि चाइना वर्सेस साइना, साइना वर्सेस चाइना। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री या ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, सिंधु का जो रिकॉर्ड चाइनीज प्लेयर्स के साथ है शुरू से, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अगर आप देखें या चाइना में देखें या बाहर भी देखें, बेहतरीन रिकॉर्ड है उनका। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, वैंग यीहान जिसने कि साइना को परेशान करके रखा था, सिंधु ने उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में तब हराया है जब वैंग यीहान डिफेंडिंग चैंपियन थी। But that's good for India that we've got good bench strength, because Saina Nehwal did win China Open for India in 2014. So did Kidambi Shrikant in men's, and now PV Sindhu has become the 3rd Indian to have won the Chinese Open. But since you said now more will be noticing her game, can you tell us what is PV Sindhu's game like? Is she more of a forehand player, backhand? Is she a forecourt or a backcourt player? She has, see, what I have seen is, I've never seen her so well as she moved in Rio, to be very honest. I mean, that for me was a revelation. She had the strokes. Her net game is superb, no question about it. Lateral movement is fine. But the trouble begins when you say whether she has the speed. Because this girl is young, she's tall, she covers the courts well. The trouble was speed. And I think the speed training has done the trick. Her movements have become faster. She is taking every shuttle, I mean, something that you never saw earlier. Imagine if you go back and recall the matches that you saw during Rio, what was she doing different? She was retrieving far too many shuttles. She was not known to rally for long. She had this, she had the stamina. She's putting back everything. Exactly. She's putting back all the shuttles. Her defense has always been good, but it doesn't last too long. It is like quality was there, quantity was lacking. So now the numbers are there. She's more of a smasher, so she'll probably hit the she has shuttle an all-round downwards. game. She has an all-round game. She has good smashes. People normally compare her game with Saina Nehwal, which is understandable. But these two are so different. I mean, you can never compare Saina with Sindhu. Sindhu, since we are talking about Sindhu, let's stick to that. She has the ability to come up with these forehand drops so beautifully, and especially the overheads, because she's tall, it allows her a certain height, that height, the trajectory. From there, she can dictate the terms. That is one advantage which she shares in common
with the world number one, Carolina Marin. Yeah, She's a left-hander. The kind of deception that she has, Sindhu doesn't have. But Sindhu has powerful shots, and she seizes the big moments. That is what I've seen. With confidence, you tend to seize the big moments faster, and that is what she's been doing. And this is what exactly we saw against Sun Yu, the way she took that, that lead in the last game. And then even when she, like when she dropped the first match point, she was at it because she had the cushion of a number of points. Right. So that was our Ground Zero segment. Let's move to another segment of ours, which is called In Trends, and that connects you to the social media glitterati. Both the news, PV Sindhu winning the Badminton Super Series Premier title, and the other one, that's India winning the Test match, had a lot of netizens going onto the social channels to congratulate the Indian team. After the news of PV Sindhu winning the Super Series Premier title at the China Open Badminton Tournament started doing the rounds, the social media was all flooded with best wishes to the Olympic silver medalist. The Facebook and Twitter world was loaded with thousands of tweets and posts celebrating the victory of the young badminton star from Hyderabad. Well-known faces and netizens took to Twitter to express their elation over Sindhu's win. Here's a look at some of the tweets that started flooding the social media since Sunday evening, wishing the Olympic medalist. The Indian film fraternity was not to be left behind in this regard. Various personalities also congratulated Sindhu by tweeting and posting about her win. Well-known people from the corporate sector chipped in with their inputs to wish the ace shuttler. Famous sand artist Sudarshan Patnaik also paid his tribute by making a beautiful sand art of PV Sindhu. PV Sindhu registered a hard-fought 21-11, 17-21, 21-11 victory over China's Sun Yu to clinch the China Open, just months after becoming the first Indian woman to win a silver at Olympic Games in Rio in August this year. While PV Sindhu continues her dominance on Facebook, #England by 246 and Jayant Yadav are amongst the top trends on Twitter. #England vs India started trending on Facebook with over 1 million people posting and talking about it. Twitterati was all seen with tweets of wishing Team India on its victory. हर तरफ पीवी सिंधु को बधाइयां दी जा रही हैं और एक्सपेक्टेशंस भी इस तरह से बढ़ रही है। अगर हम बात करें, बहुत लोग कह रहे हैं कि और भी अच्छा करो। अगर हम खास तौर पर बात करें हांगकांग सुपर सीरीज़ की और ऑल इंग्लैंड की, तो वहाँ पर खुद उनका सपना है कि वो नंबर 1 उभर कर आए। देखिए, ऑल इंग्लैंड जीतने का सपना तो सबका है, सारे बैडमिंटन का, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। अगर आप जो 12 जो सुपर सीरीज टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कोई जो है ऑल इंग्लैंड बहुत बड़ा नहीं माना जाता। कोरियन ओपन उससे बड़ा है, इंडोनेशियन ओपन उससे बड़ा है, काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं। लेकिन क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और ऑल इंग्लैंड के साथ हिस्ट्री अटैच्ड है, ट्रेडिशन जहाँ है, जैसे हम कहते हैं विंबलडन बहुत बड़ा है, हालांकि चारों स्लैम्स में यूएस ओपन से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफर्ड। तो अगर हम वैसे भी देखें तो ये स्टेटस वाइज एक हिंदुस्तानी के लिए ऑल इंग्लैंड बहुत बड़ा है। हम लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं अरे प्रकाश नाथ जो पहले हिंदुस्तानी थे वहाँ सेमीफाइनल पहुँचे, उसी तरह से। तो ऑल इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश पादुकोण और उसके बाद गोपीचंद, और वो सबका ड्रीम है। साइना नेहवाल फाइनल तक पहुँची हैं,
2010 में सेमीफाइनल खेली, पहली भारतीय लेडी थी जो वहाँ तक पहुँची। बिल्कुल। हम लोग एक्साइट हो गए उसके बारे में, लेकिन अब हमें सडनली लगता है कि अगर एक फिट साइना और एक फिट सिंधु खेलेंगी, हो सकता है कि दो में से कोई एक जीत ही जाए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर वो दोनों फाइनल में पहुंचे। हालांकि ये पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि साइना की अभी फिजिकल जो भी फिटनेस है वो तो अभी सवालिया निशान है उसके सामने, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन अभी सिंधु से दुगनी है, क्योंकि उनकी जगह कोई और आ गया है। अभी जो ट्रेंड हो रहा है ये अभी तक हमने पिछले 2006 से लेके अब तक, ट्विटर जब नहीं था तब भी जितना लोगों ने साइना किया है, अभी क्योंकि उनकी इंजरी और उनके फॉर्म दोनों चीज़ें वो बाहर हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हाल है। लेकिन साइना का उनका जो टेम्परामेंट है ये इन ए वे इंडियन बैडमिंटन के लिए अच्छा है, क्योंकि अब वो दुगनी बिल्कुल एपेटाइट से आएंगे बिल्कुल जीतने के लिए, क्योंकि उनकी जगह किसी और ने ले ली है। ये उनके बर्दाश्त से बाहर है, उनका टेम्परामेंट अगर है वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनका जो नी इंजरी हुआ उसमें जो दर्द हुआ उनको, उससे कहीं ज्यादा दर्द उनको अब ये हो रहा है कि मेरी जगह ले ली। उनको सिंधु के अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सब लोग सिंधु की बात कर रहे हैं, साइना का नाम नहीं लिया जा रहा है। इन ए वे ये इसका पॉजिटिव साइड अगर हम लें तो वो ये है कि साइना बिल्कुल अब डिटरमिन्ड होकर वापस आएंगी। और सिंधु के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे ऑल इंग्लैंड जीतना है। ऑल इंग्लैंड, मैंने जैसे कहा, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक आम आदमी भी अगर कोई बड़े टूर्नामेंट का नाम लेता है तो ऑल इंग्लैंड, हाँ ऑल इंग्लैंड तो जीतना है। क्यों? क्योंकि हमारा वो माइंडसेट ऐसा ही रहा है, ये जनरेशन से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और ऑल इंग्लैंड में अगर वो अच्छा करना चाहती हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्यों ना करें, क्योंकि प्रेस्टीज उसके साथ अटैच्ड है। यानी कि कुछ बेहतर करने का दबाव, क्यों अमित? प्रदर्शन और दबाव दोनों चीजें हैं। Absolutely, but in terms of the congratulatory messages that have been coming, we did see in the opening ceremony of the Goa Film Festival, the Honourable Minister mentioned congratulations for PV Sindhu, and then even in the winter session of Parliament, the Lok Sabha Speaker congratulated PV Sindhu. And you mentioned Twitter, Facebook, in the era of social media, when you have got so many congratulations coming from everyone, how does that impact a player? Tremendously. If you recall what happened before the contingent left for Rio, never before do I remember, this Prime Minister hosting the members of the contingent ahead of their departure. I mean, that serves as magic, to be very honest with you. And then the kind of plans that he had for them, even after the team returned, the way he received the team, he said, okay, it's okay that we didn't get the number for what we got 4 years ago, but let's plan ahead. Right. That's proactive. Now, this is what a sportsman needs. You'll have your good times, you'll have your not so good times, but to have this belief that there's somebody backing us, that is what is special for any sportsman. When the high is there, like Sindhu is now going through a high, everybody is backing her, that is natural. Look at Saina, no takers, sorry. But the fact of the matter is, this is where she needs support. Yes. This is how we actually have to look at it. But then life is never presenting itself in a very ideal situation. We are looking at reality. The reality is, Sindhu is at one end of the scale, Saina is at the other end of the scale. And we have to strike a balance somewhere. As you said, let's look at the positive side of it. Let's hope it's a healthy competition between these two champions and it's India who gains. Let's move on to the next segment that we have in this new avatar of Sports Hour, that's called Down Memory Lane. And today in this segment, we will jog our memories to the beginning of the Australian Open tennis. At the inception of Australian tennis, this tournament was called Australasian Championship. And then in 1927, it was renamed Australian Championship. The current format is known as Australian Open, which started in 1969, and the venue became permanent, which is Melbourne. We'll also bring you a profile of Australian cricketer Justin Langer, who was born on this very day. We want to jog your memory to tennis history. On this very day in 1905, the currently popular tennis tournament of the Australian Open Grand Slam was played for the first time. Before the Melbourne Park Stadium era, tournament dates fluctuated as well, particularly in the early years because of the climate of each site or exceptional events. Since its inception, the Australian Open has been staged in 5 Australian and 2 New Zealand cities, namely Melbourne for 55 times, Sydney 17 times, Adelaide 14 times, Brisbane 7 times, Perth 3 times, Christchurch once in 1906 and Hastings in 1912. Gradually, many years later, the last fortnight of January was finalised for Australian Open and the permanent venue decided was Melbourne, Australia.
Those star legends and exhibition events. The tournament was first known as the Australasian Championships and then became the Australian Championships in 1927 and the Australian Open in 1969. On this day, another Australian sporting event happened. Aussie cricketer and opening batsman Justin Langer was born. He made his Test debut at home against West Indies on 23rd January in a Test match in 1993, which was won by touring side West Indies by a narrowest margin of 1 run. Langer scored 20 runs in first inning and bettered his second inning total and compiled 54 runs. He was perhaps the first Test opener in history to average in the mid-40s, yet always had to struggle for his place in Aussie side because of great bench strength in Aussie opening batting lineups around that time. In a land of dashers and crashers, Langer was seen as a grafter, a battler. The reality was somewhat different. He played 105 Test matches and in 182 innings scored over 14,000 runs at a healthy average of 45.27. He played only 8 ODI matches for his country and 41 T20 matches. Justin Langer's devotion to captain Steve Waugh saw him nicknamed Mini Tugga alongside JL and Alfie. His bond with Hayden was even closer. Langer's found the gap. It's a poor delivery from Richard Dawson, who's moved to bowling over the wicket. The pair missed each other when they were apart, exchanged beer hugs in the middle, and gave the impression of always of two boys living out a dream. He has come on when it comes to over-pitch deliveries. He does not go off. His strong-willed performances were a highlight in a batting lineup that failed to fire against England in 2005. And with 394 runs at 43.77, he was Australia's leading scorer. He also took blows to the helmet and body, which are a common theme of his career. 9th one here in Australia, the 3rd against England, and he's very first at the MCG. वाकई जस्टिन लेंगर एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ऐसे जुड़ गया जो हमें भी जानकर अच्छा लगता है कि कैसा इतिहास था। वाकई अगर आज के इस एपिसोड पर नजर डालें, बहुत सी नई चीज़ें हमें जानने को मिली, वो भी खास तौर पर आपसे। आपने कीमती वक्त दिया और अहम खबरों पर चर्चा की। क्यों अमित? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश राव जी। शुक्रिया गीताशा, शुक्रिया अमित। Thank you very much, Rakesh Rao, for joining us. So, of course, as Sportsa comes to you Monday through Saturday, it's important that you watch. And let me ask you this question: out of the 4 segments, Sports Roundup, 25 stories, Ground Zero, social media segment, or Jog Your Memory, which one you like the best? All of all the segments. That's really nice. So if you want more of such segments, do join us on Sportsar Monday through Saturday, 9 through 10 in the evening. And you can always get more sports updates on social media, facebook.com/Doordarshan Sports. Our Twitter handle is @DD Sports Channel. Also, you can go to youtube.com/Doordarshan Sports for more. So much so for this edition of Sportsa. बिल्कुल, और आज वाकई खास रहा और स्पोर्ट्स आर की पूरी टीम आपसे लेती है इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।